Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover some important disadvantages of computer network. So first disadvantage is robustness. Okay, so as we all know, the connected systems on a network entirely depend on the main server. They always depend on the main server. Okay, and this is also known as the central device. In case of computer network, if the server breakdowns, the system cannot be used anymore. Okay, this is the central device and there are so many devices connected to this central device. जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर्स का हमारे नेटवर्क के साथ अगर कनेक्शन है तो जो कुछ भी चीज़ें स्टोर होती हैं वो सर्वर पे स्टोर होती हैं. ओके, लेकिन अगर हमारा सर्वर ही डिलीट हो जाए, सर्वर ही ख़राब हो जाए, तो ये सभी कंप्यूटर्स के जो डेटा हैं जिसके भरोसे हम सर्वर पे बैठे हुए हैं वही ख़राब हो जाए तो सबका डेटा लॉस्ट हो सकता है ना. फॉर एग्जांपल हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं. मान लीजिए ये डिफरेंट यूज़र्स हैं जो कि सब लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल आर डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ कॉमन डिवाइस दैट इज सेंट्रल डिवाइस सर्वर. ओके, अगर हमारा जो है मोबाइल ख़राब हो जाता है तो वी कैन एक्सेस आवर फेसबुक आईडी विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर. ओके, we can get everything with the help of our ID. okay, but अगर ये सर्वर ही फेसबुक कंपनी का सर्वर ही ख़राब हो जाता है तो it becomes very difficult to access those services. It becomes very difficult to access every type of data. okay, so this is taken under robustness. okay, not only the main server, if the problem lies in the central server or the bridging devices. okay, this is the bridging devices that is used to connect server and the computer system. okay, if there is any problem in the bridging device then definitely it becomes very difficult to repair it. okay, so that is the reason why most of the large organizations tend to keep their central server as a powerful computer. okay, which makes the implementations and maintenance easy. So robustness is the major disadvantage of using of using computer network. Second disadvantage is independence. It is independence. Since networks are based on centralized server, most of the decisions are made themselves, right? And this hinders the freedom of users who wants to use the computer as they desire. राइट, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे फेसबुक यूज़ करते हैं, अगर हम लोग चाहें फेसबुक को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने का तो वो पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें सर्वर पे स्टोर है, उसकी सारी डिज़ाइनिंग सर्वर पे स्टोर है, जो कुछ भी हमारा डेटा है ऑल द थिंग्स आर स्टोर्ड ऑन अ पर्टिकुलर सर्वर. सो मोर ओवर कंप्यूटर नेटवर्किंग इंक्लूड्स न्यू प्रोसीजर्स which makes the process very easier. Thus, there are more chances where users will be relying on computers even for basic tasks that cannot be done on hand. So this is taken under independence. okay, there is no independence. There is no independence. okay, all the devices connected to the particular server are always dependent. okay, all the devices are dependent on the server systems, right? So the third point we have is malware attack. Malware attack. Basically, we all know due to the interaction of different devices with the help of a computer network, a virus can easily spread between computers. Virus can spread easily within computers in a network. Even if one of the computer happens to get infected with malware, there are high chances of them spreading the remaining computers. Suppose this computer has a virus and this computer is sharing some of the files to the computer number 3 and with those file virus भी साथ में transfer हो जाएगा and after some days suppose this system is sharing some file with the fourth computer, तो यहाँ से वो वायरस शेयर होकर के कहाँ चला जाएगा, हमारे फर्स्ट सिस्टम के पास चला जाएगा. सो मालवेयर अटैक इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क. Similar instances can happen if the central server becomes infected. Suppose if the server get infected, then every device will be infected. okay, and all these can lead to file corruption. For avoiding this, the computer network administrator
should regularly scan for malwares. Okay, so in case of malware attack, scanning of the system or scanning of the central devices, very important. So the next point is security. As we all know, in case of computer network, security is also taken under the advantages section, because if our computer is secure, if the system or the server is secure, then definitely our data is secure, right? लेकिन अगर हमारा जो सर्वर है या कंप्यूटर डिवाइस है जहाँ पे जिसकी हेल्प से सारा डेटा स्टोर हो रहा है वो ही सिक्योर नहीं है, तो हमारा डेटा भी सिक्योर नहीं रहेगा. ओके, सो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर or service providers to take care of the security issues. Okay, so the next point is, fifth disadvantage is productivity. Okay, one of the major problem of computer networking is that it can drastically decrease the productivity of the computers. It can decrease productivity of the company or any computer. Okay, when there is an internet access, employees can use it for other purpose other than the office work. Okay, suppose मेरे ऑफिस में मुझे इंटरनेट कनेक्शन दिया हुआ है अनलिमिटेड, तो मैं काम के साथ साथ वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी तो करूँगी ही, चाहे मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना है या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करना है. तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो सकती है. देयरफॉर मैनेजमेंट मस्ट डिसाइड टू व्हाट एक्सटेंट कैन दे अलाउ द कंप्यूटर यूज़. दैट मीन्स ये कंपनी के सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें नेटवर्क में क्या क्या एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हैं. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज maintenance. Okay, for the proper functioning of the computer network, it requires regular maintenance. Regular maintenance is always needed. The problem is this cannot be done with basic skills. It involves advanced configurations. To maintain the system, we need advanced configurations and complicated installations. Okay, therefore a skilled network manager with experience need to be deployed if we want to maintain our system, right? So all these are the disadvantages of using computer network. I hope you understand. Thank you.